Hello everyone, I am Lieutenant Shubham Pratap Singh, Assistant Professor in the School of Management, Babu Banarsidas University. So in this video lecture, I am going to cover the various aspects of the purchasing research. So purchasing research is very important for industrial undertakings as well as the manufacturing enterprises. So, as you all know कि जब भी हमको कोई भी item या कोई भी product purchase करना होता है, we have to do lot of research work. Then we will purchase the item or purchase the product. So similar in the case of the business enterprises कि जब भी उनको कोई भी materials या कोई भी ऐसा item purchase करना होता है, they have to do lot of research work before purchasing any kind of product. So it's all about the purchasing research. So we can start with the purchasing research. Here you can see the next slide. Purchasing research. So when we talk about the purchasing research, so here is one of the definition given by the Philip Kotler. So purchasing research is the systematic design, collection, analysis, and reporting of data and findings relevant to a specific purchasing situation facing the company. Means a specific situation which will be faced by a company. So the findings or the analysis, collection, design of data can be done before purchasing any product. So purchasing research से सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या हमको जब भी कोई प्रोडक्ट आइटम परचेज करना होता है, मटेरियल परचेज करना होता है, देन वी हैव टू डू lot of research work, so that will be known as the purchasing research. So before making any purchase, we have to do lot of research work. So the aim of purchasing research is to ensure optimal decisions and improve profitability. So basically purchasing research का जो objective और जो aim है, that will be for ensuring the optimal decisions. Optimal decisions सब कब ले पाएंगे जब हमने sufficient amount of purchasing research कर रखा होगा before making any purchase. अगर suppose हमने कोई भी research work नहीं किया और directly market में जाके item को और product को purchase कर लिया, so that will not be or it will also cause the losses or the increase in the cost. So basically the aim of purchasing research is to ensure optimal decisions and to improve the profitability of it. So the purchase department should be assigned the necessary authority. So basically इसी purpose को fulfill करने के लिए purchase department को एक necessary authority assign की जाती है as well as the responsibility assign की जाती है for administering such controls as to buy the right quantity of the right quality. So basically जो भी आप purchase कर रहे हैं, that will be the buy the right quantity of the right quality at the right time at the right price from the right supplier on right terms. So these are the basic considerations or the basic conditions which will be taken care by the purchase department or for which they are assigned with the authority and responsibility to administer these. That will be the right quantity, right quality, right time, right price, right supplier and right terms. तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमको जो बेसिक टास्क जो हमारा है दैट विल बी द परचेजिंग रिसर्च. तो हमको अगर कोई भी आइटम परचेज करना होगा देन वी हैव टू गो दीज पॉइंट्स. तो परचेजिंग क्या होती है? परचेजिंग रिसर्च तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जब भी कोई परचेज करना होता है उससे पहले जो है हम लॉट ऑफ रिसर्च वर्क करते हैं सो दैट कि हम ऑप्टिमल डिसीजंस ले सकें और वो डिसीजंस ले सकें दैट विल हेल्प आउट इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट और मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी. So that will be the purchasing research. So now I'm going to discuss with you all the purchasing. What is purchasing? So purchasing is an important function of materials management. It is a very important function of the materials management. So in any industry, purchase means buying of equipments, materials, tools, parts, etc. required for industry. So in any industry, purchase means buying of equipments. Equipments buy कर रहे हैं हम या materials buy कर रहे हैं, tools खरीद रहे हैं, parts खरीद रहे हैं, that are required for the industry. जो industry की requirement है उसके बगैर हम कोई भी task complete नहीं कर सकते या production नहीं कर सकते. So that will be known as the purchasing. The importance of the purchase function varies with nature and size of the industry. When we talk about the purchase function,
तो परचेज फंक्शन का जो इम्पोर्टेंस है that varies with the nature and size of the industry. So means according to the nature and size of the industry, it is different from one industry to the another. So हर एक इंडस्ट्री के लिए परचेज फंक्शन की अलग अपनी इम्पोर्टेंस होगी. So in a small industry, this function is performed by works manager. तो अगर हम छोटी इंडस्ट्रीज की बात करें जो सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड उसमें जो ऑपरेट करती हैं, तो उन केस में उन इंडस्ट्रीज के केस में और उन स्मॉल इंडस्ट्रीज के केस में दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय वर्क्स मैनेजर. वर्क्स मैनेजर मींस हु इज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग ऑल द वर्क्स एंड ऑल. So in large manufacturing concerns, this function is done by a separate department. So basically अगर हम छोटे बिजनेसेस की बात करें तो वहां पे सेपरेट आपका जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो सेपरेटली आपका नहीं रहता है. मींस देयर इज नो सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परचेजिंग. बट इन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देयर विल बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट दैट विल बी नोन एज द परचेज डिपार्टमेंट. सो ये सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन लार्ज बिजनेस कंसर्न्स that will be the responsibility of the purchase department, but in the case of small industries it will be done by the works manager. So the moment a buyer places an order, he commits a substantial portion of the finance of the corporation which affects the working capital and cash flow position. So जैसे ही एक buyer जो है वो order place करता है, he commits a substantial portion of the finance. As you all know कि जब भी वो order place करेगा तो order को place करने के लिए उसको एक certain portion of finance और funds का जो है वो देना पड़ेगा, which also affects the working capital as well as the cash flow position. क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, so it is a cash outflow, means जो भी फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से आपका आउटफ्लो हो रहा है, आपके पास से जा रहा है. सो मींस जो फंड्स होंगे वो आपके कम हो जाएंगे और फंड्स डिक्रीज हो जाएंगे. So basically the moment a buyer places an order, he commits a substantial portion of the finance of the corporation. That will be known as the purchasing. So here you can see objectives of purchasing. अब पहले तो बात हो गई परचेजिंग रिसर्च की. परचेजिंग रिसर्च हमने डिस्कस कर लिया, परचेजिंग क्या होता है वो आपको बता दिया. देन द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग. बेसिकली परचेजिंग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फिल करती है और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग. So when we talk about the objectives of purchasing, so the basic objective of the purchasing function is to ensure continuity of supply of raw materials. It is the basic objective of purchasing function is to ensure continuity of supply of raw materials. Means जो भी raw material आपकी enterprise में आपकी industrial undertaking में required है for the purpose of production, उनकी continuous supply होती रहे, as well as subcontracted items and spare parts, and to reduce the ultimate cost of the finished goods. And the another objective is that will be the reducing the ultimate cost of the finished product. कि finished product का जो हमारा final और जो total cost है that will be reduced. This will be the objective of the purchasing. In other words, the objective is not only to procure the raw materials at the lowest price, but to reduce the cost of final product also. We can say that the objective is not only to procure raw materials at the lowest price. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने lowest price पे purchase कर लिया और उसको procure करके रखा हुआ है अपने पास, but to reduce the cost of final product. हमको अपने final product की भी cost को क्या करना है, minimize करना है और reduce करना है. So this is the basic objective of purchasing. As well as here are the some points are also given in objectives of purchasing. So as you can see, here is the first point: to avail the materials, suppliers and equipments at the minimum possible cost. Means जो भी materials हैं that are available और equipments are available at the minimum possible cost. Means उनकी जो cost of acquisition हो that will be minimum, so that the final product cost will be reduced. This will be the one of the important objective of the purchasing, that is to availing the materials, suppliers and equipments at the minimum possible cost. And the another objective is to ensure the continuous flow of production. And one of the another objective of the purchasing is for ensuring the continuous flow of production. तो पहला बेसिक आपका क्या था, ensuring the continuity of the supply of raw material. Another is to ensure flow of production. Means जो flow of production है, जो production process है,
में कोई भी इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए, और जो भी आपका प्रोडक्शन का फ्लो है दैट विल बी continuous. This will be the objective of the purchasing. And the third point is to increase the asset turnover. It is also objective of the purchasing to increasing the assets turnover, as well as the to develop an alternative source of supply. परचेजिंग की ये भी एक ऑब्जेक्टिव है परचेजिंग का, टू डेवलप एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई। कि मींस जो आपका एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ सप्लाई है अगर उस सोर्स ऑफ सप्लाई की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है या वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो यू हैव टू डेवलप एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई। इन केस अगर एग्जिस्टिंग सोर्स से हमें सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो हम अल्टरनेटिव सोर्स से उन इन्वेंट्रीज को और मटेरियल्स को प्रोक्योर कर सकते। एंड द लास्ट इज to establish and maintain the good relations with the supplier. It is also the objective of purchasing for maintaining the good relations with the supplier. So buyer and supplier relationship is very important from the point of view of the growth and profitability of any business. So that's all for the objectives of purchasing. So next is to achieve maximum integration with other departments of the company. So it is also an objective of the purchasing to achieve maximum integration with other departments of the company. As you all know, in large business concerns, जो purchasing department होता है, that will be separately work for purchasing research and purchasing the various items for production. So there will be an objective to achieve the maximum integration with other departments of the company. एज यू ऑल नो कि जो परचेजिंग है वो अकेले सिर्फ और सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करेगा, उसमें मे बी आपका सेल्स डिपार्टमेंट का भी रोल होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी होगा, बिकॉज बेसिकली जो सेल्स होती है, सेल्स डिपार्टमेंट आप अपने पास्ट ईयर्स के डेटा के बेसिस पे फोरकास्ट करते हैं, देन अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन के बेसिस पे ही हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं, कितनी क्वांटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना हमको परचेज करना है. So there will be a maximum integration with the other departments of the company also by using the purchasing. And the next is to train and develop the personnel. Personnel means individuals जो involved है उस particular field में, so उनकी training and development का responsibility भी किसका होगा, आपका purchasing. Then efficient record keeping and management reporting. So that will be a very important objective of purchasing. That is the efficient record keeping and management reporting. If whatever the records are kept within the firm, that will be reported to the management. Then the next is parameters of purchasing. So there are certain parameters of purchasing, I think, which I have already told you in the definition of the purchasing research or purchasing. So you can see the first point is right price. Whatever you are going to purchase, that will be purchased on a right price. आपको सही पैसे पे ही उसको खरीदना है, सही मूल्य पे खरीदना है, राइट प्राइस पे खरीदना है. ऐसा नहीं होगी आपका वो मार्केट में आपका 10 रुपीज का अवेलेबल है बट आपने जो है उसको 12 रुपीज में परचेज कर लिया. So it will be the one of the important parameter of purchasing, that is the right price. And the next is right quality. So price के साथ साथ में हम यहाँ पे क्वालिटी भी कंसीडर करेंगे कि आप भले ही राइट प्राइस पे परचेज कर ही रहे हैं बट आपकी क्वालिटी भी राइट होनी चाहिए. अगर वो क्वालिटी ठीक नहीं है तो उस केस में आपका प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट करेगी. So that will also lead to a loss. And the next is right time. So जब भी आप परचेज करते हैं that will be purchased at the right time. राइट टाइम का मतलब क्या है, इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए और स्टॉक आउट हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद में आपने परचेज किया. सो द स्टॉक्स आर परचेज्ड और इन्वेंटरीज आर परचेज्ड एट द राइट टाइम और मटेरियल्स आर परचेज्ड एट द राइट टाइम. एंड द नेक्स्ट इज राइट सोर्स. कि जो भी जिस सोर्स से भी आप परचेज कर रहे हैं, मे बी एग्जिस्टिंग सप्लायर से कर रहे हैं या किसी न्यू सप्लायर से कर रहे हैं या फिर अल्टरनेटिव सप्लायर से कर रहे हैं, so that will be item will be purchased from the right source also. The right price भी होना चाहिए, quality भी हो, right time भी हो, as well as the right source. Source का मतलब from where the item will be purchased, as well as the right quantity. So quantity भी यहाँ पे matter करेगी कि जो भी आप purchase कर रहे हैं that will be purchased in the right quantity. Right quantity में purchase करना है. And the right attitude, right contracts, right material, right transportation, right place of delivery. So these are the 10 parameters which will be considered
while making a purchase of inventory of a material. तो जो भी आप परचेज करें उससे पहले आपके ये सारे पैरामीटर्स आपको इंश्योर करने होंगे. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू परचेज एनी प्रोडक्ट. सो हियर यू कैन सी परचेजिंग पैरामीटर्स का एक डायग्राम है. As you can see, right attitude, that is the SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threats, right place of delivery, that is price communication, right sources, vendor rating purchases. Vendor rating purchases का basic मतलब क्या है कि हर एक vendor की एक rating आप ascertain करते हैं. vendor rating कैसे होती है वो मैं आपको आगे के उसमें बताऊंगा. So vendor rating में basically कि suppose एक vendor की rating जो है higher है और एक की lower है, so we will go with the higher rating vendor. Then right contracts, that is legal aspects or the modes, ये right contracts होने चाहिए vendor के साथ में. Right transportation, that is the cost analysis, transportation and logistics. It means transportation और logistics की आपकी क्या cost आएगी. Right time, that is the reorder point or lead time. Lead time is the time between the placing an order and receiving an order, as well as the right price, that is negotiation, and right quantity, that is the AOQ, economic order quantity, and the other inventory models on the basis of which the right quantity will be purchased, as well as the right quality, rejections and specifications की ये particular आप specify करेंगे, specifications बताएंगे supplier को हमको ये quality चाहिए, ये चीजें हमको required हैं. Then right material, that is the value analysis. Value analysis we have already covered in previous lecture. So basically value analysis भी करेंगे. So these are the certain parameters which will be considered during a purchase decision. And the next is purchasing procedure. So purchasing procedure की अगर हम बात करें, so one is the recognition of the need. So purchasing procedure में सबसे पहला step जो होता है, that is the recognition of the need. कि जो product और जो item हम purchase करने जा रहे हैं उसकी need है हमको या नहीं. So in the first step we are going to recognize the need of purchase. Then the selection of supplier. In the next step the supplier will be selected. कि जो भी आपके पास supplier है available और जो भी available resources हैं और sources हैं, उन sources से आप अपने supplier को select करेंगे. Then placing an order, आप order place करेंगे with the supplier. Then follow up the order, the follow up will be done with the supplier regarding the order. Then receiving and inspection of the material. So जो भी आपको order receive हुआ है उसका inspection करेंगे जो material आपको receive हुआ है. Then payment of the invoice, then maintenance of record and maintenance of the vendor relation. So this will be the purchasing procedure during making and purchase of the inventories or the material. First is recognition of needs. सबसे पहले need को recognize कर लिया. Then selection of supplier, placing the order, follow up of the order. So follow up करने के बाद में आपको जब order receive हो जाता है, after receiving inspection of materials will be done. जब आप materials inspect कर लेंगे, जब आपको लगेगा कि जो quality आपको expected थी वही quality आपको deliver की है हुई है, then the payment of invoices will be made. And then the next step, maintenance of record and maintenance of the vendor relations. So vendor relation is one of the important aspects of the material management or the purchasing procedure. So here you can see purchasing procedure. So सबसे पहला step जो होता है need recognition, then selection of supplier, placing order, follow up, receiving and inspection, payment of invoice, maintenance of record, maintenance of vendor, maintenance of vendors relation. यार so basically need recognition में क्या करना है कि आपको सबसे पहले need recognize करनी है, selection of supplier, supplier select करने हैं from available sources. So this is the purchasing procedure which will be followed by the business undertakings during making an purchase. So there are some special purchasing systems are also there. So one is forward buying. Forward buying की अगर हम बात करें, so forward buying or committing an organization far into the future, usually for a year, depending upon the availability of the item, the financial policies, the economic order quantities, the quantitative discounts, and the staggered delivery, the future commitment is decided. Forward buying का मतलब क्या है कि सपोज आप फ्यूचर पीरियड के लिए आप किसी भी एक सप्लायर के साथ में कमिटेड हैं, आपने उसको कहा है कि जो भी हम परचेज करेंगे in particular period of time, in this future period of time, that will be purchased from you only, that will be based on the economic order quantity, quantitative discounts की कितना discount दे रहा है, and staggered delivery की stages में वो delivery दे सकता है या नहीं, and on the basis of these things the future commitment is decided. That will be known as the forward buying कि हमारा एक future का commitment है कि in future में हम इस period से
आपसे परचेज करेंगे. Then the next is tender buying. So tender buying basically in all public departments. So in public, all semblance of favoritism, personal preferences should be avoided. तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स में और हम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में जो भी पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं और फेवरेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम टेंडर बाइंग करते हैं. So as such, it is a common for government departments and public sector undertakings to purchase through tenders. कि हम टेंडर्स निकाल देते हैं किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए और जो टेंडर्स आपका सेलेक्ट होगा और जो मिनिमम कॉस्ट पे हमको प्रोवाइड करेगा that will be selected. This will be known as the tender buying. That will be also a purchasing system. Then the blanket order system. A blanket order system क्या होता है? So this system minimizes the administrative expenses and is useful for C types items. C type items कौन से होते हैं? जिनकी cost of consumption cost जो है वो बहुत कम होती है. Agreement to provide a required quantity of a specified items over a period of time. Usually for a 1 year at an agreed price, deliveries are made depending upon the buyer's need. Blanket order system basically C type items के केस में हम करते हैं. C type items वो होते हैं जिनका annual consumption cost जो है वो कम होता है. ठीक है. So basically अगर हम C type items के केस में इसको अप्लाई करेंगे so ये बेसिकली हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने सप्लायर के साथ में कि आपको जो है इतनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है स्पेसिफाइड आइटम्स की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको डिलीवर करनी है यूजुअली फॉर अ 1 ईयर. सो जो भी आपकी डिलीवरी होगी ड्यूरिंग द 1 ईयर दैट विल बी एट द एग्रीड प्राइस कि जो एग्रीड प्राइस है आपका इस ऑर्डर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसी पे आप डिलीवर करेंगे. देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस एंड डिलीवरीज आर आल्सो मेड डिपेंडिंग ऑन द बायर्स नीड. ऐसा नहीं है कि बायर की नीड नहीं है आपने डिलीवर कर दिया. जब बायर की नीड होगी तभी आपको डिलीवर करना होगा. दैट विल बी नोन एज द ब्लैंकेट ऑर्डर सिस्टम. And the next is zero stock. Sometimes some firms try to operate on the basis of zero stock and the supplier holds the stock for these firms. तो कुछ फॉर्म्स जिनके पास स्टोरेज का इतना सारा जब स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती है या उनको मटेरियल्स को प्रोक्योर नहीं किया जा सकता तो कुछ एक फर्म्स जो है वो ऑपरेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीरो स्टॉक. जीरो स्टॉक का मतलब क्या है कि उनके पास तो स्टॉक जीरो रहेगा. वो सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट्स उतने ही आइटम्स उतने ही मटेरियल्स मंगाएंगे जितने की उनको रिक्वायरमेंट है. बट जो भी स्टॉक होगा दैट विल बी होल्ड बाय द सप्लायर फॉर दीज फर्म्स. तो यहाँ पे क्या लिखा है? सम फर्म्स ट्राई टू ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ जीरो स्टॉक एंड द सप्लायर होल्ड द स्टॉक फॉर दीज फर्म्स. वो खुद के पास स्टॉक को होल्ड करके नहीं रखेंगे बट जो सप्लायर होगा दैट द सप्लायर होल्ड्स द स्टॉक फॉर दीज फर्म. तो सप्लायर होगा वो उनके लिए जो है स्टॉक्स को होल्ड करेगा. Usually the firms of the buyer and seller are close to each other so that the raw material of one is finished product of another. So basically ये जो firms होती है जीरो स्टॉक में इन केसेस में जो होता क्या है the firms of the buyer and seller जो है वो close होते हैं एक दूसरे से so that the raw materials of one is the finished product of another. एक का raw material जो है दूसरे के लिए क्या होगा? Finished product होगा. Alternatively, the system could work well if the seller holds the inventory and if the two parties work in close coordination. This will be only possible while we are working with the close coordination. कि अगर buyer और supplier close coordination के साथ में काम नहीं करेंगे, then this technique will not be useful. And as well as the next is rate contract. The system of rate contract is prevalent in public sector organizations and government departments. It is common for the suppliers to advertise that they are on rate contract for the specific period. So rate contract क्या है कि for the specific period के लिए आपका rate contract fix है. That will be in the cases of the suppliers to advertise that they are on the rate contract for the specific period. So after negotiations, the seller and the buyer agree to the rates of the item. क्या आप एक particular negotiation के बाद में जो है buyer और supplier agree करते हैं rates of the item की these are the fixed rate और ये रेट कॉन्ट्रैक्ट है हमारे आपके बीच में. तो जो भी आइटम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस रेट. देन द नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोकल बाइंग मींस परचेजिंग फ्रॉम वन कस्टमर इन प्रेफरेंस टू अदर. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इफ यू किल माय कैट आई विल किल योर डॉग एंड डू अनटू योर कस्टमर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू.
जो आप अपने साथ में करना चाह रहे हैं, अपने साथ में जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने सप्लायर से, वही आपको अपने कस्टमर के साथ में भी करना हो. So reciprocal buying means purchasing from one's customers in preference to the other. So these are the some special purchasing systems which I have discussed in detail. So next is system contract. So this is the procedure intended to help the buyer and the seller to reduce administrative expenses and at the same time ensure suitable controls. In this system, the original intent duly approved by competent authorities is shipped back with the items and avoid the usual documents like purchase orders, material requisition, expediting letters, acknowledgement, delivery period, price and invoicing procedure. So basically system contracts वो होते हैं जिसमें सारी terms and conditions, सारा administrative work हम पहले ही कर लेते हैं. So इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका इंडेंट होता है वो इंडेंट जो है आपके ऑर्डर के साथ में शिफ्ट कर दिया जाता है. तो मींस बाकी का जो पेपर वर्क है वो बहुत ही कम रहता है इसमें. So it will contribute for reducing the administrative work or administrative expense, and it also ensures the suitable control. So that's all. Thank you everyone for watching this video lecture. Stay tuned for other video lectures of the production and operations management. Thank you all.